Hello and good afternoon everyone. Welcome back once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy. So we are going to proceed in our today's session of rapid 10 MCQs, daily dose of 10 MCQs based on current affairs daily. So चलिए देखते हैं, the date being 27th of January, class 44. Okay, so 27 January के जो current affairs हैं हमारे, उनका ये questions हैं. So in which of the following places are the famous Laker toys made by the artisans? News में अभी हमने देखा है हमारे जो है DCA सेशन के भी अंदर कि किस तरीके से हमारे ग्रेट आर्टिस्ट हैं राजू साहब, उनको अभी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है. भारत सरकार ने उनको जो है यूनियन गवर्नमेंट ने उन्हें बोला है कि पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा. ओके, किसके लिए? बिकॉज ऑफ हिज चैंपियनशिप, हिज मास्टरी बीइंग हिज नेम इन द एस लिस्ट ऑफ द टॉयज, ऑफ द वुडन टॉयज. और नया नाम क्या है लोकेशन का? एटिकोपक्का. ओके, आंध्र प्रदेश के अंदर वरादा रिवर के नजदीक मौजूद ये एक छोटा सा गांव है. हम बात करें एग्जैक्टली, सो इट्स नियर टू द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम. ओके, सो वरादा रिवर के नजदीक का ये गांव, तो वरादा रिवर भी न्यूज में है, वो भी आपको पढ़ना है. ओके, और जहां पर बनते हैं लेकर टॉयज और दी वुडन टॉयज. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी, दैट इज एटिकोपक्का. ओके, so moving, this is what you can see here, how wonderful they are crafted, how beautiful they look like. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. India's total forest and tree cover has increased since the last assessment done in 2019 according to the India State of Forest report of 2021. 2019 में जो है डेटा निकाला गया, रिपोर्ट 2021 में आती है. सो वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. गाइस प्लीज बी वेरी क्लियर. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलना है. ओके, ऑफ व्हाट? ऑफ देयर टोटल ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. Okay, so Mizoram, Madhya Pradesh, Manipur, Maharashtra. Guys, please be very specific. Decreasing order. Okay, so अगर हम correct answer की बात करें, okay, जो according to the report, India State of Forest Report 2021 की हमारी जो है, okay, so according to this, okay, so the correct answer will be B, 1, 3, 2, 4. Mizoram, then Manipur, then Madhya Pradesh, and then we got at last Maharashtra. Okay, so this is what the India's State of Forest Report 2021. Okay, so अगर आप देखो यहाँ पर जो न्यूज है वो क्या है? States fall short of targets to improve forest cover and its quality. Okay, so you can see here the National Mission for Green India (GIM) is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change. So it aims at protecting, restoring and enhancing India's forest cover and responding to climate change. उसी के तहत हमने निकाला India's State of Forest Report 2021, which is not something to be made joy of. Okay, this is something which has not provided us any kind of a joy when it comes to the GIM, that will be the National Mission for Green India या GIM Green India Mission. स्वच्छ भारत अभियान है, डिजिटल इंडिया है, तो साथ ही साथ ग्रीन इंडिया भी. Okay, so green, that is clean India, we need to make it is one of the 8 missions under what? The National Action Plan on Climate Change, taken up by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, based on COP15 convention, that is COP15, and apart from that taking care of the Kyoto Protocol, Copenhagen and Geneva Conventions, taking up everything in which we have also taken the consideration of the Ramsar Convention on the wetlands. ओके, सो इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं. देखा है आपने किस तरीके से दाउकी रिवर की हम बात करते हैं. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो टॉकिंग अबाउट द क्लीनेस्ट विलेजेस ऑफ द नेशन रिसाइडिंग इनसाइड द नॉर्थ ईस्ट, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री. देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव सीन किंजिंगरी, Jinkingri actually very recently in news, that is the living roots. We have already discussed about those facts. Okay, so ये सब कहाँ इशारा कर रहे हैं हमारे GIM? बोले तो ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, मिनिस्ट्री का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC. देन COP21,
देन COP22 दोनों के प्रोविजंस इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, साथ ही साथ कोपेनहेगन, जेनेवा, रामसर एंड क्योटो प्रोटोकॉल्स, दे आर आल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल टॉकिंग अबाउट द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके गाइस, सो GIM ध्यान रखिएगा, दैट इज ग्रीन इंडिया मिशन, इसी के तहत रखा गया है. ओके, सो व्हाट यू कैन सी हियर, दैट इज द स्टेट्स with their percentages of forest cover. Okay, decreasing है, something which is not so good. If we talk about the reference here, when the Glasgow Convention took place, that is COP22 when it took place, okay, 2022, it's what was the time when we marked it, okay, so Conference of Parties, there on the climate change, there was a data in the news that created too much of ruckus and nuisance in the minds of the climate protectors and the climate activists. The data actually told us that every year, with regard to the deforestation, every year we are losing forest area equivalent to the whole of England. राइट, यानी कि हर साल हम कम से कम एक इंग्लैंड जितना बड़ा, एक नहीं बल्कि वो 2 इंग्लैंड की बात कर रहे थे, कि 2 इंग्लैंड जितना बड़ा हम फॉरेस्ट हर साल लूज कर रहे हैं. दिस वाज द डेटा गिवन जस्ट बिफोर द ग्लासगो मीटिंग, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट टुक प्लेस इनसाइड ग्लासगो. ओके, और इसी के ऊपर यहां पर हमारा ये भी डेटा है, अगर आप देखो फॉरेस्ट कवर. Okay, so this is something which is, you know, we need to take an immediate and affirmative action. Okay, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. That is the third question here. The term T+1 seen in the news is related to which of the following? इसको अभी हमने हाल ही में अपने जो है DCA सेशन में भी डिस्कस किया है, तो अगर आप DCA के भी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो तो भी आपको इसका आंसर पता होगा. What it is? Free trade agreements deal, carbon pricing mechanism, trade related settlements, or track to diplomacy mechanism. So if we talk about T+1, what we have seen that with this India becomes the second country, okay, to install the T+1. Okay, India becomes the second country to install the T+1. Okay, for what? For its stocks trade. Okay, T+1, that is stocks trade here. Okay, now when we figure out स्टॉक्स ट्रेड, तो उसमें क्या बताया, +1 का मतलब है यहां पर दैट इज 1 डे. अभी तक हम T+2 या T+3 तक थे, हम इसको T+1 पे ले गए, दैट इज ऑल द रिसीट्स, पेमेंट्स एंड ड्यूज shall be cover up within 1 day, that is 24 hours. बोले तो अगर वेंसडे को खरीदा तो ट्यूसडे तक क्लियर कर देना है, सॉरी थर्सडे तक क्लियर कर देना है. Okay, so it is what? Trade related settlements. Okay, T+1. So India becomes the second country in the world, okay, to cover up the T+1 principle inside its trade business. Okay, stocks business. Okay. Okay, we move on to the fourth question. With reference to the GST compensation cess, consider the following statements. So it is levied on all goods produced in India. All the proceeds received from the cess are credited to the public accounts of India, and GST Council has extended the time for levy of the cess till 2026. Okay, तो पॉलिटी और इकोनॉमी के मिक्सचर से निकला हुआ एक क्वेश्चन है यहां पर ये. Okay, so what we have seen here, what we can see, what is the correct answer? So moving on to the directly options here, option C, okay, is the correct answer. Okay, so that is 3 only, right? So it, अगर आप देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, that is GST Council has extended the time for the levy of the cess till the year 2026. Okay, so guys, if you see the explanation, statement 1 is not correct. Why? Okay, okay, right? So statement 1 is not correct. As per the agreement between the center and the states, the latter were to be compensated for any revenue loss due to the switch over to the GST. Statement 2 is also not correct. Why? Because all the proceeds received from the GST compensation cess
would be credited to the non-lapsable fund that is known as the GST compensation funds. That is, it is not going to be inducted in any of the public accounts. We have created a very different non-lapsable fund, that is the GST compensation fund. Okay, and then the statement 3 stands valid. So moving on to the fifth question here. Consider the following statements with reference to the district council established under the 6th schedule of the Constitution of India. GST council के बारे में बताना है. Some of its members are nominated by the governor of the respective state. Oh, sorry, it's not GST council, district council. Then it can make regulations for the control of money lending and trading by non-tribals. And the last one, like the regional council, it is empowered to assess and collect land revenue. Okay, so district council, 6th schedule once again, agar aap baat karoge, talking about the article number. So what we can see here, there are 2 articles inside 6th schedule that talks about specifically the administration of AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Article 244 clause 2 and article 275 clause 1. These are the articles inside our 6th schedule dealing with specifically the administration of the tribal areas inside the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Okay, तो चलिए अब बात करते हैं सही जवाब की. So what is the correct answer here? So D, that is all of the above 1, 2 and 3 statements are correct. That is, some of its members are nominated by the respective governor of the state. Then it can make regulations for the control of money lending, that is money trade and trading by the non-tribals as well. And like the regional council, it is empowered to assess and collect the land revenue. Okay, तो 2 type के councils बनते हैं schedule 5 और schedule 6 में, regional councils and district councils. Okay, so this is it, the correct answer here, that is D, all of the above statements are correct. Okay, now 6th question, with reference to the Indus River, consider the following statements. Passes through J&K, Uttarakhand and Himachal. 5 tributaries known as Panchanad. Indus is the westernmost of the Himalayan rivers in India. So very basic geography question we can call it, and one of the most simplest, because Indus Water Treaty in news always, which compels us actually to study Indus River in depth. So what is the correct answer if you are going ahead with the current affairs daily? So this is one of the easiest questions for you. So what is the correct answer? So the 3rd statement only stands valid. That is option C. Okay, you can see here the 3rd statement, that is C, 3 only. It is correct. Rest, 1st and 2nd, they are not correct. Okay guys, so you can see here. Okay, the Indus, also known as Sindhu, is the westernmost of the Himalayan rivers in India. Okay, so originates from the glacier known as Bokhar Chu in the Tibetan region at an altitude of 4164 kilometers. Okay, तो अब अगर आगे का स्टेटमेंट अगर देखो तो ये सारी चीजें तो ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इससे. जो स्टेटमेंट्स गलत हैं अगर हम उनकी बात करें, ओके, सो वी टॉक अबाउट द इंडस यूज्ड टू फ्लो थ्रू पंजाब. पंजाब वर्ड बना है पंजाब. Okay, that is the confluence of 5 rivers. Okay, तो 5 rivers क्या क्या हैं? That is land of 5 glasses of water or land of 5 rivers. Ravi, Beas, Satluj, Chenab and Jhelum. Okay, so ये बनता है हमारा पंजाब. और जो पंजनाद जो वर्ड है वो एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है, पर्शियन लैंग्वेज से निकला हुआ. Okay, so rest of the explanation is here guys, so I suggest all of you to read the explanation very carefully, okay, as it will provide you n number of information and knowledge on the Indian geography and the locations. Okay, so 7th question here. The Western Ghats are comparatively lower in elevation than the Eastern Ghats. The Western Ghats are highly eroded by the peninsular rivers as compared to the Eastern Ghats, and the Western Ghats and the Eastern Ghats meet each other at the Nilgiri Hills. Once again, very basic Indian geography का question है हमारा. तो सही जवाब अगर हम बात करें, so once again 3, okay, that is option C, 3rd statement only is correct. The rest, 1st and 2nd statements are not correct. Okay, तो न्यूज में क्यों है? अगर आपने न्यूज की हेडिंग देखी है, स्टेट वांट्स सेंटर टू रिमूव 852 विलेजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स ESA. Okay, that is इको सेंसिटिव एरियाज से हटाने की बात करी जा रही है. Obviously demand that I don't think so personally that will be taken into the consideration, okay, because it will not provide valuable inputs
when it comes to the national plan on climate change. We have just a couple of minutes back discussed the GIM, that is Green India Mission. Okay, so option 3 is only correct. The rest, first and second statements, are wrong. So consider the following statements about Motor Vehicle Act. So Motor Vehicle Act provides rules regarding traffic regulation and state transport undertakings in India. Yes, absolutely it does. Then the next one, सीधे ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरीके से गलत है. That is, the design, size and calligraphy on number plates is a matter of choice of the vehicle owner. No, it's not. The design, size and calligraphy is provided by the Regional Transport Office, that is RTO. वैसा ही रखोगे तो चलेगा, और else चालान कटेगा, फिर नहीं चलेगा. ओके, सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. तो उस हिसाब से क्या जवाब हो गया हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. ओके, तो हाल ही में चेन्नई के अंदर अभी 16,107 गाड़ियों का चालान कटा. ओके, जिनका देखा गया कि नंबर प्लेट, कैलीग्राफी और साइज जो प्रोवाइडेड जो फ्रेम्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको वायलेट कर रहा है. सो यू कैन सी हियर विद इन 2 days 16,107 ओनली एंड ओनली इनसाइड द सिटी ऑफ चेन्नई. ऑल ओवर इंडिया तो फिर ये पता नहीं कितना चला जाएगा. ओके, सो नंबर प्लेट सही से बनवाएं, कहने का मतलब बस इतना ही है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज फॉर्म्स द सिस्मिक बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स क्रस्ट एंड मेंटल? Another basic question with geography. So Gutenberg, Mohorovic, Conrad and Lehman. Okay, Lehman actually. So हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है हमारी, उसका नाम है Mohos discontinuity. Okay, popularly known as Mohos discontinuity, and इसका जो एक्चुअल नाम है that is Mohorovicic discontinuity. Okay, किसके किसके बीच है? क्रस्ट एंड मेंटल. सो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? दैट इज बी. ओके, मोहोवोरिक डिसकंटिन्यूटी. ओके, ये मौजूद है किसके? हमारे अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच. ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो बुद्धा पहाड़ या बुद्ध पहाड़ इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, सो अगर हम बात करें बुद्धा पहाड़ की, तो हाल ही में न्यूज में रहा है ये. हम सब जानते हैं कि 3 डिकेड्स लॉन्ग एक टसल बना रहा इस एरिया को एक्सट्रीमिस्ट फ्री एरिया डिक्लेयर करने में. ओके, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर्स के ऊपर मिलेगा हमें ये. सो व्हाट इट इज? ओके, एन एंशिएंट साइट ऑफ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, न्यूली डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट, a prominent area of Maoist stronghold and region dispute near the eastern side of Indo-China border. तो अब explanation से आप समझ गए होंगे, that is a prominent area of Maoist stronghold. Okay, so that is popularly the name Buddha Pahad. Okay, so we can see here Soren becomes first Jharkhand chief minister, Shibu Soren, to visit the former Maoist hotbed, that is Buddha Pahad. ओके, तो 3 डिकेड्स लॉन्ग जो है 30 साल तक चला एक बहुत ही कोर ऑपरेशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां पर मौजूद रेबल ग्रुप्स के बीच. ओके, बट यस, फाइनली वी हैव डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ सक्सेसफुल विथ रिगार्ड टू द ऑपरेशन कोबरा, दैट इज कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन. ओके, बिहार और झारखंड पुलिस का बनाया हुआ, दैट इज कोबरा, और इन्होंने मिलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, थंडरस्टॉर्म ये सब चलाया और बुद्धा पहाड़ को माओइस्ट फ्री डिक्लेयर किया. ओके, so guys, I hope the inputs were valuable and you loved the session, enjoyed it as well. Thank you for joining. Okay, see you all soon tomorrow morning sharp 10 AM DCA सेशन के अंदर. प्लीज मन लगाकर पढ़ाई करें, एग्जाम में महज 4 महीने बचे हैं आपके सामने, और एक चीज की गारंटी है कि बने रहिए, क्लासेस रेगुलरली करते रहिए, एग्जाम आपका जो है जरूर क्वालिफाई होगा, सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित और निश्चित है. ओके, बस शर्त इतनी है कि मन लगा के, दिल लगाकर, कायदे से, पूरी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है. रेस्ट इज एश्योर्ड. ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड जय हिंद.